Hi, good evening everyone. Good evening dear students and welcome to Arifin. I hope preparation सब ठीक ठाक चली जी. So we are here with the current affairs of this week, January 1st week, 2022. So before beginning, I will want to make a special so we are here with the a special announcement कि देखो अभी तो online सब हो गलानी. That means the coaching institutes are closed because of this Omicron. So if you want to upgrade your preparation, so you can join our programs at Arifin. So crash batches रे भी join कर पारिबे कि test series रे भी join कर पारिबे. So that is one option with you. So let's start with the discussion. The first question you can see on your screen: which union ministry is implementing Gram Ujala program? I hope you know the answer. I hope so. If you want to answer it, you can at least type it. Gram Ujala program के launch कला और फिलहाल मैं गुटे notice करूँ तो इठी जब दिन Gram Ujala को चीज़ ताले Gram Ujala रा full form कौन? What is the full form of Ujala here? You see, it's very easy. Ujala stands for Unnat Jyoti by Affordable Leads for All. Right. So this is the full form of Ujala here. Ujala सहित associated आउ गुटे scheme होची which is synonymous. ना पाका पाकी same भलिया सुना जाए Ujjwala. UJJWALA. Ujjwala scheme मन थांदु confusion पड़ीबे नहीं. Ujjwala is related to LPG. किंतु जदि Ujjwala होची, Ujjwala is related to lighting. आउ इठी आउ गुटे जिनसा mind रे रखो. What is the full form of LED? LEDs. LEDs रो full form कौन? Right, that you have to know. Light emitting diodes. Right, so here the answer for this is Ministry of Power. Ministry of Power recently launched the Gram Ujala scheme. This is first question. Next one. Which Asian country recently unveiled its national security policy? Asian country recently national security policy launch kala, and the country was basically Pakistan. Pakistan launched karchi scheme. So this policy was launched by Pakistan. Right? Pakistan's cabinet has decided to go with it. So the policy is a 5-year policy document covering 2022 to 2026. So देखो को dimension to question पचारी परिबे. एक तो question number 1 किए launch कला. अब अपन देखो तो options are very close. अपन देखो तो Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, all of them are neighbors to India. Number 1. Number 2 पचारी को जदि आउ कौन पचारी परिबो ना 20 माने तार माने policy रो document रो period टा केते रहउची जदि 5 years रुहे ताले 2022 to 26 रहउची. So this is question number 2. Next, the latest version of Consumer Protection Act was passed in which year? देखो Consumer Protection Act रो माने होची consumer मानकर interest रो माने हित रो रक्षा करिया पे Consumer Protection Act तैयारी कराला. I will tell you one more thing. Who is a consumer? There is a person who is in need of something. गोटे लोक को किसी goods के services रो दरकार अछि. Suppose for an example, the goods is basically cooked food. Cooked food, right? Cooked food माने से रोषेई करिवार condition रे नाही, ता पकरे समय नाही, so से कोन करिवो cooked food order करिवो. And who is this person? This is the person. Alright, से कोन करिवो ना Zomato नहले Swiggy. Zomato नहले Swiggy रो. Of course, there are other platforms as well. किंतु Zomato नहले Swiggy रो से कोन कला order कला. Now these people are actually service providers. से माने कोन कले ए लोक पाखरे आनी की cooked food means biryani हो निकी नहले अन्य कोन सी जिंस अछि के पहुंचेले. So now this Zomato and Swiggy are actually service providers. अब consumer एठी किए ना जे किनिला ता बदल रे से ए कंपनीज गुडा को कोन दोची ना पैसा दोची. Simple भाषा रे जदी कहबी if a person is paying for something in the sense gote goods ki servicepai jodi pay korchi, that means he is a consumer. All right, the item may be consumable or item may be a durable one, jemti refrigerator, fridge eguda सब लोक किनंती. Okay, so in both the cases the person is a consumer. Upon suppose gote aeroplane रे travel करचंती, then even then you are a consumer, right? That means you are availing a service there. So against it you have certain protections.
That means upon jodi paisa deychanti tahale apanku it is your right to get the desired level of quality of service. Okay, so for that Consumer Protection Act was passed. Alright, and recently question kono na question hochi ko masiya re yaku au thara amend kara gala. Right, so it was amended in 2019. You see, this is the answer. 2019 is the answer here. पिला माने जानि रखथांतु current affairs रो weightage ASO भलिया exam रे बहुत अधिकार होची. If you analyze it, it would be nearly more than 51%. सीधा नहले indirect question सुरा आसुची पाखा पाखी अधारो अधिका question current affairs रो ही आसुची. So पिला माने टिके फोकस करी के जत्ते बेले भी आपण पढु चंदे ना टिके vigilant ही के पढुथिबे. So what I mean to say here, को प्रकार रो amendment होना देखि कोन change आसिला एथिरे. You see, जो सब लोक माने direct sellers in the sense that means गोटे पट साइड रे गोटे कंपनी सपोज XYZ कंपनी अछि, से कोन करूची, से तयारी करूची आमला जूस तयारी करूची. Alright, so in one sense आमला जूस को directly जदी कंज्यूमर पर्यंत पहुंचोची, जदी से इंटरमीडिएरीज थ्रू रे जाउनी, से पिरामिड स्कीम लॉन्च कर परिबनी. Right, there are certain pyramid schemes जो तरे members करके करिवार थाए. So say pyramid schemes माने तयारी कर परिबे नाही. That means as per the new rules, any direct sellers are prohibited from promoting pyramid schemes or enroll any person in such schemes. Right, so if you want to sell it to the consumer, but you cannot go with the pyramid scheme. तयारी कर परिबे नाही. Alright, so this was Consumer Protection Act which was amended in 2019. Next, अच्छा जदी मको ता क्लियरली सुनि परचंती ताहले कैन यू टेल मी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मसिया रे लॉन्च करा हेतला. इन व्हिच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज enacted? If you can answer me, check करो तो नेट रे आ मते कोंदु. Now next one, which state legislative council has passed a bill to give more powers to higher education minister in the state run universities? तो ये स्टेट के थला ना महाराष्ट्र थला. ओके, किंतु जदी क्वेश्चन को टिके डीपली एनालाइज करिबा से पचाउचे लेजिस्लेटिव काउंसिल कथा से हायर एजुकेशन मिनिस्टर इन द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज को अधिकार पावर देबा पई के कहला ना महाराष्ट्र. सो भारत रे जदी हमें देखिबा को स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि. Which Indian states have legislative council? How many Indian states have legislative council? If you see on the northern side, it is Uttar Pradesh, Gote. तापरे नेक्स्ट आसुची बिहार, तापरे एपटे आसुची महाराष्ट्र, तातळे आसुची कर्नाटक, तातळे आसुची आंध्र प्रदेश एंड तातळे आस्ता ऊपर आसुची तेलंगाना. सो ए स्टेट्स रे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑपरेट करते. दैट मींस दे हैव बाइकैमेरल लेजिस्लेचर. दैट मींस दे स्टेट रे गोटे पट साइड रे अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि और गोटे लोअर हाउस दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली अछि. सो दीज आर 6 Indian states which have legislative councils. A very prominent question of the exam. All right, so this is basically Maharashtra. The next question, ratings by ICRA, what is the estimated real GDP growth of India during the next financial year, that is FY 2022? Right, so it is good jinse janantu what is ICRA basically. ICRA basically ICRA is a credit rating agency. ICRA होची गोटे credit rating agency. यार काम कोन ना गोटे कंट्री रो से क्रेडिट रेटिंग करे. दैट मींस हाउ क्रेडिट वर्दी ए कंट्री इज. सिंपल भाषा रे कोन ना, सपोज देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इंडिया. दैट मींस जदी कोनोसी फॉरेन इन्वेस्टर कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर, सपोज गोटे लोक यूएसए रे अछि, तले सी जदी इंडिया रे इन्वेस्ट करे, देन हाउ सेफ हिज मनी इज. तमाने रिटर्न्स आसीबार आशाटा केते, that is what is reflected by a credit rating agency, right? So this is reflected by a credit rating agency. ICRA कोन को ICRA भलिया credit rating agencies माने कोन करते, देशों को रेट करते एक्चुअली कि ए देश रे इन्वेस्टमेंट ता केते सेफ. So ICRA अनुसार credit rating agency हिसाब रे India's GDP is likely to grow at 9% in the next financial year, right? This is one information. अच्छा, next, यदि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हे नबा में ताले दी प्रकार रेटिंग एजेंसी अछि. रेटिंग एजेंसीज आर ऑफ टू टाइप्स. one are international, one are national. So
my request would be कि आपण माने international और national credit rating agencies मानकर गोटे list बाहर करतो and please know them कि कोगुड़ा international rating agency और कोगुड़ा national rating agencies. Alright, and I hope GDP of जानी जानते. I hope you know the full form of GDP. Can you tell me anyone? GDP of full form कौन पिला माने? Can anyone tell me? Next, KSLV-2 Nuri rocket, which is first domestically produced space launch vehicle of which country? The Nuri rocket पहुंचा को country रा. Recently, this rocket was test fired by South Korea, right? KSLV-2 Nuri. This rocket was test fired by South Korea. Again, South Korea जदि हमें देखिबा South Korea world रो को angle रो होची को side रो होची world रो जदि हमें India नेबा India रो जदि हमें एमपी South East Asia अमेरिका को जिबा ताहले South Korea would be something here. South Korea lies somewhere here. यदि हमें Philippines, Indonesia एवढा सब क्रॉस करके जिबा ताले South Korea कोठी आसीबो ना एठी आसीबो. This is South Korea. South Korea. Right? Yes, yes. Priyanka ma'am, you are correct. GDP stands for gross domestic product. It's very easy question. Okay. So South Korea has recently launched this rocket, that is KSLV Nuri rocket. All right. And friends, in one of the classes we'll talk about the missile development system in India. तासे तो आपण डिस्कस करिबा ना माने ए रॉकेट्स घरिकार जो मेकानिज्म अछि ताको भी गोटे क्लास रे डिस्कस करिबा. All right. Now which country launched better health smoke free campaign? A country कियतला ना United Kingdom थला, UK. Right? But how many of you know that who is the Prime Minister of UK? Who is the Prime Minister of UK? Just check and tell me who is the Prime Minister of UK, United Kingdom. Right? And one more homework to you. What is the meaning of UK? What is the meaning of UK? UK रो माने टा actually कौन? ठीक है, check करिवे. All right, but presently tell me who is the Prime Minister of UK? See the next question. The financial stability. The financial stability report is a flagship report released by which institution? Financial stability report. It के launch करती? It report को launch करती Reserve Bank of India. Right? The financial stability report is a half-yearly report. This is information number 1. तमने ये वर्ष रे दीथर release करा जाउती, and it is released by Reserve Bank. The recent edition of report was released by RBI. As per the report, the retail-led credit growth model in India is beginning to face issues due to two factors. Number 1, increase in defaults in consumer finance portfolio and slowdown in the new credit segment. Right? So this is the, yes. So UK Prime Minister Boris Johnson, right? That's correct. All right. So in the financial stability report here launch करती ना Reserve Bank of India launch करती, but who is the governor of RBI right now? A very easy question. Governor of RBI. And extended question, कहते तमा governor से. अच्छा. Sabah Al Khalid Al Sabah. This is the name of a person. He is the Prime Minister of which country? ये कौन देशर Prime Minister? Image देखो. Sabah Al Khalid Al Sabah. He is the Prime Minister of which country? He is the Prime Minister of Kuwait. Right? देखो तो प्रति question रो मु आपन को किछटा important question आउरी extra पचारू. All right, so you please check them and tell me, or else you check them at least. So ये को देशर Prime Minister? ना, he is the Prime Minister of Kuwait. But friends, can you tell me who is the father of Kuwait? Who is the father of Kuwait? Which answer आसु जी देख ले. Check कले who is the father of Kuwait. And Kuwait, this is question number 1. Question number 2, Kuwait को Gulf पाखरे situated अछि. Kuwait is situated in near to the which Gulf? Kuwait, right? These are two important questions. Kuwait. Yes, Shaktikan Das is the governor of RBI. That's correct. कितने number governor? सेटा भी ठीक है, check कर दो भाई. RBI is governor Shaktikan Das, the first Odia to become the governor of RBI. But कितने तम governor? एटा check करो. So I said Kuwait who is the father of Kuwait? और Kuwait को Gulf पकड़े अछि. Which country is the new member of BRICS New Development Bank? Right? If you know it, BRICS Bank यारो genesis टा आगे कोई दूसरी, right?
अर्लियर ये जो बैंक रो ना थिला ना ता ना थिला ब्रिक्स बैंक लेटर ए बैंक रो ना चेंज हे के गला न्यू डेवलपमेंट बैंक ता माने आज का डेट रो न्यू डेवलपमेंट बैंक होची कालिका रो ब्रिक्स बैंक थिला ऑलराइट सो व्हिच कंट्री रिसेंटली जॉइन्ड इट इजिप्ट ऑलराइट इट इज दीटा क्वेश्चन भलो से जानतो क्वेश्चन नंबर 1 होची कोन नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रिक्स ब्रिक्स विषय कोन कोन जानछो तारो फुल फॉर्म तारो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तारो हेड किए अछंती मेंबर्स किए अछंती तापरे आउ कोन ना तारो हेडक्वार्टर कोठी ए पांचटा क्वेश्चन आंसर ब्रिक्स रिलेटेड जानबी ऑलराइट एंड अबाउट इजिप्ट विषय कोन जानिया को पड़िबो ना इजिप्ट रो डिफरेंट डायमेंशंस जेंति तारा ज्योग्राफिकल लोकेशन इजिप्ट रो लोकेशन कोन इजिप्ट रो कैपिटल कोन which is called the gift of Nile का को पूछन these are all certain very important questions okay आउ कोन इजिप्ट रे what is famous in Egypt रे जदी दिला ताले कोन फेमस अछि एटी ऑलराइट so these are all important questions related to Egypt okay कोटे सुएज कैनाल भी अछि देखि देबे ठीक the GST council has decided to defer the increase in GST rates on which product okay recently government decided कोन कला ना GST को माने गोटे प्रोडक्ट ऊपर बढ़ेबा आ से प्रोडक्ट ता कोन थला इट वाज टेक्सटाइल बेसिकली टेक्सटाइल आइटम्स ऊपर GST बढ़ा जीवो ऑलराइट किंतु एठी क्वेश्चन किछरा अराइज होची कोन ना GST काउंसिल जो कहउचंदी GST काउंसिल रो चेयरपर्सन किए होचंदी हु इज द चेयरपर्सन ऑफ GST काउंसिल दैट इज नंबर 1 नंबर 2 GST itself is a very big question GST रे जो हमें टैक्स रेट कहउचंदी तार टैक्स स्लैब्स गुडा सब कोन GST केते प्रकार रो GST डे केबे GST रो टैगलाइन कोन एटा सब क्लासरूम रे मु डिस्कस करै छी ऑलराइट सो जदी जानि नाते जिंसोडा एटा को औथरे सर्च करिवे ऑलराइट आई रिपीट GST रो केतेटा स्लैब्स अछि GST रो टाइप्स गुडा कोन GST डे केबे GST रो टैगलाइन कोन तापरे GST रो को आइटम्स गुडा को एक्सेप्ट करा जाईची को आइटम्स ऊपर GST लागू नाही ओके एगो सब आ तापरे जीरो GST और नील GST राइट यस मो पचारतले कोन कुवैत को गल्फ रे अछि पर्शियन गल्फ यस दैट इज करेक्ट ओके सो हियर द क्वेश्चन इज GST काउंसिल का ऊपर रेट्स पूरा डिफर करछि को आइटम ऊपर ना टेक्सटाइल दैट इज द आंसर ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच स्टेट गवर्नमेंट स्लैश्ड 25 रुपीस per liter on petrol and diesel prices for two wheelers owned by poor people ताले वो स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली गरीब लोक मान को भाई 25 टंका प्रति लीटर हिसाब रे पेट्रोल रे रेट कमेछि एंड व्हाट वाज द स्टेट और व्हिच वाज द स्टेट इट वाज झारखंड बट ठीक टेक्निकल डिटेल्स जान थांतु कोन ना झारखंड रो जे सीएम अछंते हेमंत सोरेन से कोन कले अनाउंस कले 25 रुपीस पर लीटर पर पेट्रोल माने पेट्रोल रे 25 टंका करेंगे पर लीटर कमा जीवो और डीजल रे कमा जीवो केते ना 10 टंका राइट pardon me it was only for petrol okay petrol रे 25 टंका ही कमा जाउची the concession will be given for 10 liters of petrol माने मात्र 10 लीटर पई ही मासको 25 टंका हिसाब रे तमाने आपण इमेजिन करंतु 25 into 10 that is 250 rupees माने मासको 250 rupees ही गोटे लोको बेनिफिट पाई परिबो ऑलराइट आउ एटा का को मिलबो ना जो माने सब राशन कार्ड होल्डर्स अछथि से माने को ही स्कीम रो बेनिफिट मिल परबो नॉट टू द कॉमन पीपल ओके सो दिस स्टेट वाज झारखंड ऑलराइट क्वेश्चन यदि एठो ही परिबो कि मते कहि परिबे वेयर इज सोहराई पेंटिंग फेमस फॉर को स्टेट सोहराई पेंटिंग बाय फेमस सोहराई पेंटिंग बाय को स्टेट फेमस सोहराई पेंटिंग ऑलराइट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कोन ना डालमा नेशनल पार्क कोठी अछि डालमा नेशनल पार्क कोठी अछि वेयर इज डालमा नेशनल पार्क आई हैव टू क्वेश्चंस फॉर यू देखो प्रति क्वेश्चन भीतर जाई कि आ दि चारटा क्वेश्चन पचाउछि ओके सो टिके प्रोएक्टिव रहंतो एंड आंसर इट डालमा नेशनल पार्क एंड सोहराई पेंटिंग वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन तो द नेक्स्ट वन व्हाट इज द डेडलाइन फॉर KYC अपडेशन पिला माने आगे KYC रो फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC हियर okay please check and tell me so KYC updation by date को extend करा जाय केते ना March 31st where is the answer here is it is the answer option B right RBI कोन कला ना
बैंक्स रे जो अकाउंट अछि जो लोक मानकर से मानकर केवाईसी को से माने अपडेट करिवे एंड व्हाट इज दिस केवाईसी complete detail about your about you basically check and tell me what is KYC then which is India's first indigenously developed receptor binding domain that is RBD protein subunit vaccine for COVID-19 right so indigenously developed a vaccine ro na kartila Corbev Vaxton so Corbev Vaxtn this was the indigenously developed RBD protein subunit vaccine. So this was in news recently. अब यहाँ को permission भी मिली थी. The vaccine has been developed by Biological E Limited. This is another very important question. So has recently received Drug Controller General of India approval for emergency use. A very important term. मतलब दिशा का जिनसे इधर कोई दूसरी. What is the meaning of this receptor binding domain? Right. This is question number 1. Number 2 किए तैयारी करछि ना बायोलॉजिकल ई लिमिटेड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा ताको परमिशन किए देछि ना दिस इज डीजीसीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये ताको माने इंटरिम अप्रूवल दैछथि ओके अब गोटे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अछि देखो एगुडा सब एग्जाम रो क्वेश्चन हे परिबो ऑलराइट देयर इज अ टर्म कॉल्ड पीएसयू रो फुल फॉर्म कोन ऑलराइट देयर इज अ टर्म कॉल्ड बिराक कोन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल Alright, so these are all questions from this side. खाली एतिकीरो देखो तो कितना क्वेश्चन है. Alright. आउ थरा कोची करंट अफेयर्स रो वेटेज अधिकार होची. Alright, so you should prepare yourself accordingly. Which country has recently purchased 25 Chinese J-10C fighter jets? अब आंसर कोन हेतिबो you can easily predict it. चाइना रो किना हेछि माने अफगानिस्तान तो हिनतिबो श्रीलंका हिनतिबो ताले हेतिबो की ना पाकिस्तान right so Chinese J-10C fighter jets kiye kenila na Pakistan kenila ketara na 25 ta it looks something like this fighter jet looks like this next one which union ministry has set up 6 task forces on 6G technology wo ministry form kartibo Ministry of Communication the answer is relatively very easy okay so the task force are headed by various academia across the country of directors of IIT Madras, Kanpur, IISc. India is deploying 5G technology next year. This year, and the group will analyze the process of and the challenges of 6G. Basically, so 5G technology ever so launch hobo, but tapre kama chalchi. Smile is a scheme is to be implemented by which ministry? Ministry of Social Justice and Empowerment. Smile scheme launch kala kiye? The Ministry of Social Justice and Empowerment kintu question 8 smile the full form kono support for marginalized individuals for livelihood enterprise support for marginalized individuals for livelihood enterprise this is the full form of smile now what is the current account balance of India in the second quarter ended September 2021 right so what is the answer it is 9.6 billion deficit 9.6 billion US dollar deficit रे अछि कोन current account रो balance त माने हमें देश बाहर बहुत अधिक जिंस इंपोर्ट करि दै छथि आ ता बदल रे हमें we are in obligation to pay right so this is the answer 9.6 billion deficit रे चल छथि हमें on current account balance के देखो current account balance रो माने कोन जेतबेला आपण इकोनॉमिक्स पढु छथि ना तार लास्ट पार्ट रे गोटे चैप्टर अछि बैलेंस ऑफ ट्रेड की मोस्ट पॉपुलरली दोजी कोन ना इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड राइट फॉरेन ट्रेड ए चैप्टर ता थाए मोस्टली ए चैप्टर रे आपण देखिबे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तापरे डेफिसिट सरप्लस ए सब जिंस देथिबो ता सहित आ कोन देथिबो ना ए टर्म रथिबो देखो करंट अकाउंट गोटे टर्म थिबो नंबर 1 आ गोटे टर्म थिबो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट राइट if time permits हम गोटे क्लास रे डिस्कस भी करबा कि करंट अकाउंट कोन कैपिटल अकाउंट कोन बट फॉर द टाइम भी मु आपन को एतिकी कहि दोची जे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट हियर करंट अकाउंट माने गोटे देश जदी अन्य देश टू किछि इंपोर्ट करूची ता बदल रे जेतिकी टंका से बाकी पकोची राइट जदी बाकी पकाए
ताहले ताकू हमें करंट अकाउंट डेफिसिट कहउछथि दैट मींस सपोज गोटे कंट्री हला यूएसए रु आमे किछिटा जिंस इंपोर्ट करले केते टंकार जिंस ना सपोज 100 रुपीस रो जिंस इंपोर्ट करले दैट मींस एगुडा होची गुड्स एंड सर्विसेज हम देश को आसिला ता बदल रे हमको देबार केते अछि ता बदल रे हमको देबार अछि 100 रुपीस ओके ताले हमें करंट अकाउंट बैलेंस केते रे अछि ना वी आर एट अ डेफिसिट दैट मींस हमरो माने एक्सपोर्ट तुलना रे इंपोर्ट अधिका हिची और एज अ रिजल्ट वी हैव टू पे 100 रुपी मोर टू यूएसए नाउ वी आर एट अ डेफिसिट हियर किंतु यदि हमर एक्सपोर्ट अधिका ही जइथिबो और इंपोर्ट कम हिथिबो दैट मींस वी आर एट अ सरप्लस ओके सो ए क्वेश्चन कोन पचारुची व्हाट इज द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया त माने हमें डेफिसिट रे अछथि ना सरप्लस रे अछथि पहिले माने टिके नोटिस करंतु एठी गोटे जगह रे सरप्लस भी लिखा जाईची और एठी गोटे जगह रे डेफिसिट भी लिखा जाईची दैट मींस आंसर टा आइदर सरप्लस नॉले डेफिसिट भितर ही हबो ऑलराइट सो एठी देखंतु 9.6 बिलियन रो सरप्लस भी देची ऑप्शन ए रे और 9.6 बिलियन रो डेफिसिट भी देची ऑप्शन बी रे माने जदी एई फरक टा ही जानि नथिबे ना आ जदी खाली घोषा पाठ हिसाब रे ही काम करूथबे ताले ए प्रकार आंसर डेफिनेटली भूल करिवे ऑलराइट बिकॉज़ वी डू नॉट हैव एन आईडिया कि डेफिसिट कोन और सरप्लस ऑलराइट सो सेति पई आपन कहबी जे टिके कांसेप्चुअल क्लैरिटी रखि के पाठटा पढुथिबे सो हियर द आंसर इज 9.6 बिलियन डेफिसिट त माने हमें एति के टंका रो डेफिसिट रो अछि ऑलराइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन as on January 2022 what is the estimated population of the world as per US Census Bureau a very important question eta पढिला भलिया क्वेश्चन निहाती सो आज का डेट रे दुनिया रो पॉपुलेशन ता किते अछि 7.8 बिलियन दैट मींस इट इज नियरली 780 कोटी दुनिया रो पॉपुलेशन राइट एंड दैट टू एज पर US Census Bureau टोटल वर्ल्ड रो पॉपुलेशन हेगला किते ना 780 करोड़ as of January 2022 what is the existing annual income limit for identification of economically weaker section right another important question doctors माने एथि पई तो एजुकेट करथले right the PG घरिकार जो काउंसलिंग हे पर नथला तबे एजुकेट करथले and ultimately it they देखो नीट और PG रो एडमिशंस पई एजुकेशन होतला and ultimately this is the question you see economically weaker section हबा पई अपर लिमिट ता केते रखा जाय छी ना 8 लाख त माने जहार एनुअल इनकम 8 लाख रो कम हेतिबो सेही माने सब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भितर पळे आस्ते and they will get the benefit of that 8 lakh is the threshold limit which union ministry has released a draft national air sports policy को मिनिस्ट्री लॉन्च कला मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन याको लॉन्च करछि नेक्स्ट पीएम's एक्सीलेंस अवार्ड इज बीइंग अवार्डेड फॉर व्हिच सेक्टर देखले पीएम एक्सीलेंस अवार्ड एक को सेक्टर रे मिलछि ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे ओके देखो आपनकर गोटे माने एसो रे गोटे एरिया रहउछि कोन ना गवर्नेंस ऑलराइट सो पिला माने ए क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट आ याको इग्नोर करिबानी इफ आई कैन आस्क यू दिस वन कि हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन the father of public administration right just check and tell me who is the father of public administration governance ro part ro question padi lagya question right so please check and tell me now what is the annual export target of India for year 2021-22 annual export target ta mane export सब कंट्री चाहते निजे एक्सपोर्ट बढ़िया पे राइट तो हम एक्सपोर्ट टारगेट केते ना 400 बिलियन यूएस डॉलर रो रखि देते और एबे रिसेंटली कहउतले अपन को करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट व्हाट इज द थीम डिक्लेयर्ड बाय DRDO डे फॉर 2021 सी फ्रेंड्स दिस इज अनदर इंपोर्टेंट एरिया जो क्वेश्चन पडिबार चांस बहुत अधिक अछि इंपोर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स और क्लासरूम रे एटा बारंबार पिला माने कहै छी जे इंपोर्टेंट डेज और तार थीम्स गुडा को फोकस करतबे ऑलराइट एग्जाम हॉल रे निजे थीम तयारी करिवे जोटा थीम अछि ताको ही प्रेजेंट करिवे ऑलराइट सो DRDO observed the 63rd Foundation Day on the establishment on January 1, 2021. Alright, so this time the theme was export basically. Export was the theme this time. And remember DRDO was established in 1958 on January 1 and DRDO stands for Defense Research and Development Organization. Next one. INSACOG is the forum set up by which country to monitor genome sequencing and variation of COVID strain. पिला ने गोटे जिंस फोकस करंतु गोटे जस्ट माइंड रे आसला जिंस will you get the translated questions in the exam
एमिति हेई परिबो कि आपन को एग्जाम रे एई सेम क्वेश्चन रो ओरिया ट्रांसलेशन दिया जिवो डू यू थिंक सो Abhishek said Woodrow Wilson is the father of public administration that is correct okay but mo question होची कोन ना आपन को अपन नोटिस करचंती केबे भी कि आपन को एएसओ रे जीके क्वेश्चन रो ओडिया ट्रांसलेशन मिलुची कि राइट फोकस करबे आ ऊपर दैट मींस जते बेले मो क्वेश्चंस गुडा रे एठी ट्रांसलेशन देइनी आउ ता सहित अपन के चेक करंतु ओडिया रो ट्रांसलेशन अपन को मिलुची कि एएसओ तो ना तो सही हिसाब रे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करिवे ओके ताले सेम क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके समान देबे ना खाली इंग्लिश रे ही पचारिबे आउ तर टिके चेक कर देबे ऑलराइट हियर INSACOG is the forum set up by which country to monitor genome sequencing and variation of COVID strain right this answer is India basically माना मो कहया मतलब कोन अपन जदी टर्म गुडा माने जानि करनांती genome sequencing variation and you know INSACOG गुडा जदी जानि नांती ताले एबे ही जानिया को चेष्टा करो जदी तार ओडिया ट्रांसलेशन दोउनी ता माने अपन सेठी एग्जाम रे you will face some problems there okay acha next you see Seema Bhavani is the name of which team of border security force Seema Bhavani eta hoji all women biker team image re hi dekhi paruchanti Seema Bhavani is the name of which team of BSF ro ko team ro na it is the all women biker team right last year ye Republic Day रे भी समने परफॉर्मेंस देई थिले so over 100 female troops from different ranks are taking part in the event Seema Bhavani team was formed in 2016 and they participated in the Republic Day parade in 2018 for the first time a very important question अच्छा next से पचार जी कोन अटल टनल पिला माने अटल टनल को डिस्ट्रिक्ट रे आसु छी अटल टनल जहा को रोहतांग टनल भी कहउचंती right it was renamed as Atal Tunnel and this is in the state of Himachal Pradesh Atal Tunnel and what is the importance of Atal Tunnel Atal Tunnel is located in the hilly state of Himachal it is a 9-kilometer all weather road under the Rohtang pass on the Leh Manali highway the tunnel saw a record number of vehicles crossing the first day that is 2022 as per officials this much vehicles crossed it this is the highest ever count since it was inaugurated in 2020 October 3 रे याको inaugurate करा जायतिला just after the day of Gandhi Jayanti no so Atal Tunnel that is Rohtang Tunnel it connects the Leh Manali highway Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy eta कोठी अछि Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy which was in news recently it is in Uttar Pradesh Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy कोठी अछि ना उत्तर प्रदेश रे अछि so it is acronymed as IGRUA right it was established in the year 1986 at Fursadganj Airfield it is located in the state of Uttar Pradesh next blue book देखो ए जदी ए इशू आपने जानि थिबे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर कर जो पंजाब विजिट थिला से समय रे देयर वाज अ सिक्योरिटी ब्रीच सो सेही इशू को नै कि ए इंपोर्टेंट question पचरा जायछि blue book is a manual of which armed or force group right आउ प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी से सहित एसोसिएटेड किए थाए ना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप that is called SPG the blue book is associated with SPG त माने जते बेले कोनोसी बॉर्डर लीडर को SPG प्रोटेक्शन दोउची सेते बेले किछिटा प्रोटोकॉल से माने फॉलो करंती that protocol is the protocols are written in the book called blue book so blue book is a book official book of the SPG right so this was in news recently and that's why this has been asked next question देखो which state or UT has recognized Takht Damdama Sahib as the fifth Takht of the Sikh Takht माने basically गोटे holy shrine तमन तांकर गोटे पवित्र पीठ so पंचम एमतिया तख्त हिसाब रे काहा को रिकॉग्नाइज कराई जी दैट इज तख्त दमदमा साहिब को स्टेट रिसेंटली एटा को रिकॉग्नाइज कला यू कैन सी द इमेज हियर दिस स्टेट इज बेसिकली पार्डन मी इट इज अ यूनियन टेरिटरी दैट इज दिल्ली याको देला सो द दिल्ली असेंबली पास्ड अमेंडमेंट बिल टू दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 टू रिकॉग्नाइज तख्त दमदमा साहिब एज द फिफ्थ तख्त ऑफ द सिख ऑलराइट ओके Atacama large millimeter sub millimeter array that is ALMA is located in which country पहले माने क्लासरूम रे याको मु डायरेक्टली डिस्कस करे थी जे Atacama desert कोठी अछि
एटा गोटे क्लास रे डिस्कस करूथिले इफ यू रिमेंबर आ एटा भी कहितली which is the driest desert in the world, driest desert in the world, and the desert is basically Atacama desert. So Atacama desert कोठी रहउची एटा मु डायग्राम रे भी आपन को कहि दोची आ अटलास रे भी कहितली मार्क भी करिथिली एटा पिला माने Atacama desert कोठी रहउची ना ये रहउची चिली रे बेसिकली the coastal country of South America, basically Chile रे Atacama desert रहउची एपट साइड रो गोटे कोल्ड ओशियनिक करंट क्रॉस करूची अब ए कोल्ड ओशियनिक करंट्स पई ए जगह रे कोन होची रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी होची मतलब बहुत कम रेनफॉल मोस्टली हुए ही नहीं रेनफॉल that makes it the driest desert of the world. और जेहेतु ड्राइएस्ट डेजर्ट पिला माने गोटे क्लास रे हमें करंट अफेयर्स रे डिस्कस भी करूथले जे जदी कोनोसी जगह रे स्पेस ऑब्जर्वेटरी तैयारी हेबार थाए ताहले से जगह पई दीटा कंडीशन थिबा दरकार. नंबर 1 ह्यूमिडिटी सेठी कम थिबा दरकार और नंबर 2 क्लियर स्काई थिबा दरकार. क्लियर स्काई. ऑलराइट, सो इफ यू सी this is a Atacama large millimeter array. That means this is one of such kind of installment जहाँ पे humidity कम थिबा दरकार और sky टा clear थिबा दरकार. जदी साउथ अमेरिका रे ए काम हेची त माने सेटा कोठी करथिबे गोटे ड्राई रीजन रे ही करा जायथिबो. सो एटा कोठी हेतिबो बेसिकली Atacama desert because conditions are favorable. ओटा हेला कोठी ना चिली रे. Alright, so this is that image you can see here. So Atacama desert, the driest desert of the world, Atacama. Alright, so it is in Chile and Chile was in news recently. Chile रो नाटा ही एमिति पडला ना पिला माने चिली देखिबा को चिली बलिया. चिली कंट्री टा आपण जदी देखिबे साउथ अमेरिका रे ये चिली कंट्री देखिबा को भी चिली बलिया. ऑलराइट, अब याको मु अटलास रे मार्क भी करै छी क्लासरूम. ऑलराइट, the subsidiary of which Indian company signed agreements on jointly developing of Trincomalee oil tank farm. हला ए क्वेश्चन पढु जो मन को मु क्लासरूम रे ट्रेन करी छी से मन को पार्टी रो सुओ मोटो आंसर बाहरी. राइट, कोन पई कारण के ए क्वेश्चन को हमें डायरेक्टली बहुत थोड़ा डील कर चंती. इफ यू सी दिस इज आवर कंट्री, आम देशर सदर्न साइड रे हमर नेबर होची किया ना श्रीलंका. श्रीलंका रो गोटे पोर्ट रो ना होची ट्रिकोनमाले पोर्ट. ट्रिकोनमाले पोर्ट ता को पोर्ट रहउची अटलास रे अपन देखिबे. Go to the main map of Sri Lanka and in this eastern side you will find Trincomalee port. This is the Trincomalee port. Alright, Trincomalee tale eta koti roji, eta basically roji Sri Lanka re, kintu ethi oil container in the sense oil tank farm tiyari kariba kiye. This is Indian Oil Corporation. Where is the answer? Here it is the answer. Right, this is the Trincomalee port. Pila mane outre mu kochi page number 66 re achi Asia. ता परे परे आपण पाखपाखी जदी पेज नंबर 70 पाखपाखी को जिबे 70 की 71 सेठी आपण देखिबे श्रीलंका रो मेन मैप अछि. ए मैप रे चारिटा जगह मु मार्क करिथिले मन पका दुटिके. ऊपर पटे साइड रे गोटे पोर्ट अछि ताना होछि कनके संथुराल पोर्ट. एपट साइड रे गोटे पोर्ट अछि ताना ट्रिकोनमाले पोर्ट. सबा साउथ रे आपण जदी देखिबे हम्बनटोटा पोर्ट आ सबा वेस्ट रे जदी देखिबे एठी अछि कोन ना कोलंबो पोर्ट. सो आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड these 4 areas in the atlas. Alright, जदि मार्क करना थी प्लीज मार्क देम. Next, now Khuntakati law which was in news recently, it is practiced in which state? Khuntakati law, this you can see in the image. Khuntakati law is practiced in Jharkhand. It's a tribal law. Recently heji kon pa news re thila, a man was beaten by some villagers for allegedly cutting off trees illegally and selling them. Khuntakati law, the man was burned alive in front of police. Se kon kala mane illegally गछ काटुथला आउ सेति पई ताको विलेजर्स माने कोन कले ट्राइबल्स माने ताको निया माने जियंता पुडी दैछे पुलिस सामने. Okay, for violating the Khuntakati law. The Khuntakati system is a tribal lineage based system of joint holding of land. त माने एई Khuntakati system रे कोन करनते से माने गछ गुडा को प्रोटेक्ट करनते बेसिकली आउ माने गोटे जॉइंट होल्डिंग ऑफ लैंड त माने टोटल भूभाग को से माने कंबाइन माने कोऑपरेटिव वे रे प्रोटेक्ट करनती. गछ को अनावश्यक भाव रे काटनती. According to the system, the Munda tribal would clear the trees and prepare the land for farming, which would then belong to the entire clan. हला से एरिया ही जोटा के हम झूम कल्टीवेशन कहउचंती कि पोडू चाष कहउचंती. सो से पोडू चाष हिसाब रे से माने गोटे पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को बाछिबे आ ताको कोन करिवे सफा करिके करिवे. अननेसेसरी से माने गछ काटिबे नाही.
right? So they regard these trees as mother trees. Okay, so they do not cut trees mindlessly. Okay, so Khuntakati law by recently Jharkhand news re thila. Okay, and again Jharkhand upare dita question hi pachar dechi pila mane kon thila mane pakantu. If you have joined late tale dita question authore koi dochi. Question number 1 kon thila? Now where is Dalma National Park? Dalma National Park kouthi achi pila mane? And number 2, Shohrai painting. Shohrai painting. Shohrai painting is famous in which state? Right? So dita question na answer jani thandu at least Jharkhand side. एमिति तो बहुत question अछि जेमति Maithon Dam अछि, हां तापरे गोटे Tilaiya reservoir अछि. These are questions from Jharkhand. Japan recently signed a reciprocal access agreement, that is RAA, with which country? This country is basically Australia. Australia. So एठी जदि Japan news न्यूज रो अछि ता से तो यूएस न्यूज रो अछि ताहले मते टिके कहि परिबे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वाड कंट्री? QUAD. क्वाड कंट्रीज के सो पिला माने who are all these quad countries? QUAD. Right? Abhishek is saying Matara airport is the emptiest airport in the world. Yes, Abhishek, you remembered it correctly. Matara airport, Sri Lanka world's emptiest airport. Okay, but now tell me who are all the quad countries? Okay, all right. Integrated approach in SNTs for sustainable future has been declared as a theme of which special day? It's a theme again. National Science Day theme. National Science Day theme kon? Integrated approach in science and technology for sustainable future. This day is celebrated on 28th of February, and that too mark the discovery of Raman effect by C.V. Raman. All right. So friends, yes, Australia, US, India, and Japan. Yes, that is correct. Australia, US, India, and Japan. Quad countries are all right. Friends, with this we have come to the end of this session. Right. So I'll thank all of you, those who have participated. Okay, देखो तो क्वेश्चंस गुडा जो रेंज रे एस रे पडुछ ना से क्वालिटी रो क्वेश्चन मु प्रिपेयर करै छी. ऑलराइट, सो याको देखंतु आ टिके जहा जहा क्वेश्चन मु आपन को एडिशनली कहू छी ताको नोट करंतु आ ताको टिके माने डिस्कस भी करंतु. ऑलराइट, सो चलो लेट्स वाइंड अप द क्लास टुडे हियर. बट अगेन इफ यू वांट टू ब्रश अप योर नॉलेज इन एएसओ, जेहेतु यू सी माने ऑफलाइन क्लासेस गुडा तो कोविड में बंद कर दिया आइछि. That is not in our hands. जदि टिके अपन निज नॉलेज को ब्रश अप करिया को चाहंती, you can join our courses at Arifin. All the the crash batch, that is the brush up or the refresher batch, जितरे हम regular classes घरिका रहबो every day 5 hours, and with that you can also join the test series. So सब दिन test देबे आ evening रे तार ही discussion रहबो. Okay, so एते तो परिश्रम कले वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष रे इवन पिला माने प्रिपेयर करचंती एसो पई. So I'll go to extra effort and you will get.